direction. They have an opportunity. Open goal. And China do open their account. It's just a handful of minutes. They're not celebrating with a lot of gusto, but the goal certainly warrants plenty of cheering because China have taken the momentum. And there is a referral that's also been stopped. Hang on. आखिरी स्टिक जो था चाइनीज प्लेयर ये चैन का आया और सुनते हैं कि औपचारिक तौर पर रेफरल लिया जा रहा है कोरियन टीम के द्वारा। Just looking at the replay, we'll try to ascertain what happened. Was the ball out of bounds? Did we catch the hand of the Chinese attacker Yi Chen, number 7? Did she get a hand on the ball? I think that is what they're looking at this very instant. Surely we would need another angle as well to arrive at a more conclusive, comprehensive decision. मल्टीपल एंगल से देखा जाएगा, क्लोज जरूर है, ये तो तय है। क्या ये चैन के हाथ पे गेंद लगी है? एक और विजन, एक और एंगल। बाउंस के बाद हालांकि हाथ से बहुत ज्यादा दूर गेंद थी नहीं, टच एंड गो, बहुत क्लोज कॉल। Yeah, absolutely right, Ayush, which is why they are having to look at a bunch of replays. Here's another look. Did it catch the hand of Yi Chen? That is the pressing question. It's a very difficult decision for Yogita Pasi to make as well. She is the video umpire. There are a cluster of sticks at the exact same moment in the exact same frame. Not an easy call. Rama, can you hear me? Yes, Yogita, I can hear you. There is no clear reason to change the decision. It's a goal and Korea lose their referee. There you have it. The on-field umpire's decision has been upheld. China have their opening goal, and it was a very close call, Ayush, which is why Yogita Pasi, the video umpire, adjudicated that there wasn't enough conclusive evidence to overturn the on-field call. So China will go 1-0 up. चाइना की टीम ने खाता खोला, 1-0 से बढ़त हासिल की और वो गोल स्कोरर चाइनीज साइड के लिए यी चैन। और हालांकि हर खेल के बुनियादी नियम यही है कि यदि विजुअल अंपायर को कोई ऐसा विजन दिखता नहीं है जिससे ऑन फील्ड अंपायर का निर्णय चेंज किया जाए तो ऑन फील्ड अंपायर के निर्णय के साथ ही जाया जाता है। तो रमा पॉटनिस का जो निर्णय था कि चाइनीज साइड ने गोल स्कोर किया और उसी के चलते 1-0 की बढ़त अब चाइनीज टीम के पास है। हालांकि शुरुआती 3 मिनट में यदि आप इस तरीके से गोल दागते हैं तो जाहिर सी बात है अपने ओपोनेंट के ऊपर एक बड़ा दबाव बनाने की कोशिश में कामयाबी हासिल होती है। There's Yi Chen taking some well-deserved time on the bench. That's customary in modern hockey. Every time you score a goal, you're given some time off just so that your nerves can settle down. Your adrenaline will come back to its normal levels. That's how hockey is played. It was a very tough call in the best of times. Even for the video umpire, it was a very, very difficult call to overturn. And unless she had conclusive evidence to overturn the decision, the on-field call would have stayed, and that's exactly what's happened. China will not complain as they look for another circle entry. A long aerial pass goes well wide. Another look at the goal. It was again number 9, Ning Ma, who made the play, brought it back to Yi Chen, and it was a nice tap in. Beg your pardon, it was in fact Jashu Zhang who did make that pass from the left. सर्किट पेनिट्रेशन एक बार फिर देखने की कोशिश कर रही है चाइनीज साइड, लेकिन कोरियन डिफेंडर्स इस बार थोड़े से ज्यादा एक्टिव होंगे और वो स्पीड दिखाने की कोशिश गई। स्ट्रॉन्ग मौजूद थी, अपने साथी खिलाड़ी के लिए बैक पुश किया जहां पे जुएन ली है, उन्होंने वापस गेंद को बनाया नंबर 15 सूजी चॉई के लिए
ये कुछ बैक पुशेस, बैक पासेस जो आपको देखने को मिल रहे हैं, डिफेंसिव स्किल सेट दिखाई जा रही है कोरियन डिफेंडर्स के द्वारा। उसका कारण ये है कि शुरुआती क्षण में ही दबाव बनाना शुरू कर दिया है चाइनीज कैंप ने। इतने आसान मौके कोरियन साइड को देंगे नहीं। और हालांकि जैसा सफर रहा है, एलिसन हैरी ने भी बताया कि जो परिवर्तन किए गए थे टीम में, नए खिलाड़ियों को मौका दिया, युवाओं को मौका दिया, लेकिन उससे पूरी तरीके से खुश नहीं है चाइनीज कैंप की। क्योंकि आप बदलाव करते हैं और कई सारे खिलाड़ियों में यदि आप तब्दीलियत ले आते हैं, बहुत सारे बदलाव यदि आप कर दें एक ही मुकाबले के लिए या कह दीजिए एक ही टूर्नामेंट के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक खिलाड़ी वो प्रेशर झेल पाए। तो शायद उसी की वजह से चाइनीज साइड ने अपने खेले हुए लीग के 5 मुकाबलों में से 3 जीते, 2 गंवाए। एक मुकाबला भारत के खिलाफ और एक कोरिया के खिलाफ। साइकोलॉजिकल प्रेशर जरूर था, लेकिन इस शुरुआत के चलते शायद वो प्रेशर भी थोड़ा सा रिलीज हुआ होगा। That's indeed quite correct. And as far as Korea is concerned, they have had their share of troubles as far as scoring goals is concerned. So far, they have only notched up 5 goals in the tournament. And that was a nice deflection, and it came off the stick of number 31, Jiaki Zong, who's been a threatening presence all the time for China up front. And have a look at this fearsome slap and a nice deflection, almost proving to be an own goal before the Korean defender cleared it away. But Korea have had that problem. They have not scored many goals. They have scored 5 and they have conceded 13 goals so far. China, on the other hand, they scored quite a lot of goals. They defeated Thailand by 6 goals to none. They have scored 13 overall. Another attempt at gaining circle entry. A backhander. Clear of danger. मौका जरूर था, लेकिन मौके को बनाना वही प्रेशर सिचुएशन में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। निर्माण चाइना की जिनहुआन टैन जो स्ट्रगल में नजर आई कोरियन डिफेंडर के सामने। अभी भी गेम की जो पोजीशन है वो कोरियन डिफेंस के पास रहेगी। हालांकि मिडफील्ड पे ज्यादा समय पे हमने देखा है, चाहे आज का मुकाबला हो या इससे पहले के मुकाबले हो, चाइना की टीम थोड़ी सी स्पीड ज्यादा दिखाती है बनस्पत के कोरियन साइड। लेकिन जब जब अटैक दिखाने की बात आती है तो कोरियन साइड थोड़ी सी ज्यादा ऑफेंसिव होती है। दोनों टीम्स की कुछ खामियां, कुछ स्ट्रेंथ है जिनपे खेलती हुई ये टीम सब तक नजर आई है। सेमीफाइनल मुकाबला इंपॉर्टेंट रहता है, वहां यदि आप अपने कामनेस को बनाए रखते हैं तो चीजें बनती है। एक बार फिर अटैक बिल्ड किया जा रहा है। नंबर 19 यानी कि जैंग, जिन्होंने पिछली बार असिस्ट किया था अपनी साथी खिलाड़ी यी चैन को जब पहला गोल दागा था चाइनीज साइड ने। This is where Korea will encounter the biggest test, because they have neither attacked too well nor they have defended with a lot of conviction so far, and that's a microcosm of how the tournament has unfolded for them. China, in contrast, have scored 14 goals and conceded only 5. It's almost the reverse for Korea, who have conceded 13 and scored only 5. Korea now have just a sliver of opportunity. Jong In Kim went in pursuit of the ball, wasn't able to track it down. You will hear ripples of excitement when the possession is with Korea. And apart from the fact that this is a very sporting crowd, Korea has a special place of importance. There was an opportunity. They went for that deflection, going for that fearsome hit from the far right. And it was number 33, Sung Hee Jung, who was looking for the deflection. Wasn't to be good marking from the Chinese defender. प्ले टू प्ले मार्किंग करने की कोशिश चाइना ने जरूर की है। हालांकि भाग्य का साथ भी उन्हें मिला कि कोरियन ऑफेंस का जो स्टिक है आखिरी क्षण पे जाके गेम को डिविएट नहीं कर पाया, वरना चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो सकती थी। चाइनीज टीम सर्किल पेनिट्रेशन को देख रही है, लेकिन अभी भी खतरा पूरी तरीके से टला नहीं है, क्योंकि जब जब एक्शन उस फार एंड पे होता है जहां हम बैठे हैं, चीजें मुश्किलात का सबब बनती नजर आई है कोरियन साइड के लिए। अच्छा प्ले दिखाया, साइडलाइन के पास पैरेलल खेलना कभी भी आसान नहीं होता है, मगर बेहतरीन स्टील, उतना ही बेहतरीन कार्य यहाँ पे चाइनीज अटैकर ने किया है। निंगमा के पास गेंद, अपने साथी को उन्होंने ढूंढा और तब तक एक स्टील कोरियन डिफेंडर के द्वारा भी। China have a nice symmetry about their formation. They have 3 players in the back line, 3 in the defensive midfield, and 3 up front to support their lone striker, Manning, Ningma in fact. It's almost a 1-3-3-3.
which gives them the compactness that China are known to play with. China, of course, are not playing their full squad, the squad which won the Asian Games gold medal. China admittedly, in fact, the coach herself, Alison Allen, would be candid enough to admit that they haven't played at their best often enough, but it is a young squad, and for sure some of the players do hold potential to make the Olympic squad next year. कई सारे मौके दिए जाते हैं युवा खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है अरुण कि आपने कितने खिलाड़ियों को बदलना है। क्या आप आधी टीम चेंज करके भी इतना दबाव बना सकते हैं अपने प्रतिद्वंदी के सामने कि आप झारखंड वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी को लिफ्ट कर सके? तो जाहिर सी बात है कि जो सूरत हाल चाइनीज साइड का हुआ है, क्वालिफाई नहीं कर पाए फाइनल मुकाबले के लिए, तो अब बेटर नजर आ रही है कोरिया के सामने थर्ड पोजीशन में कम से कम फिनिश करें इस एडिशन को, इस संस्करण को। हालांकि एक दफे भी ऐसा नहीं हुआ कि वुमेन्स एशियन चैंपियंस बनी हो चाइनीज साइड। ये 7th एडिशन है, यानी कि 7वां संस्करण। 3 संस्करण जीते हैं कोरियन साइड ने। जापान को 2 बार सफलता मिली, भारत ने भी 1 बार ट्रॉफी लिफ्ट की थी, कि वो कहानी 2016 की थी। लेकिन क्या इस बार भारतीय टीम वो कप फिर जीत सकती है? आज हो जाएगा उस महामुकाबले के चलते निर्णय। China, on the other hand, will look to extend its domination. Like Ayush rightly pointed out, China have the opportunity to do better than what they might have anticipated. Of course, they would have wanted to ideally to take part in the clash that takes place later tonight, the final, the summit clash. But if that's not the case, this would be the next best alternative. China, as he pointed out, hasn't won a single edition of the Women's Asian Champions Trophy. They've also not been too abject, not been too bad. They finished runners-up in 2011, but as we speak, there is an opportunity for China which has been nipped in the bud. An opportunity for Korea, I beg your pardon, but China did put numbers in defense. They were quick on the uptake. Xinjuan Tan, who hasn't had too much game time in the tournament so far, has come in and made a difference straight away. And there is Tianjia Lu looking to quickly scamper past the defenders on the right. She pulled off an amazing goal yesterday as China opened their account first against Japan in the semi-finals. But unfortunately for them, it was Japan who rallied to beat them 2-1. And so China have finished runners-up on 2 occasions, 2011 and 2016. They haven't done too badly, but a 3rd place finish is what they'll be looking for today. कहानी में कई सारे परिवर्तन होते हैं और जैसा कि कहा जाता है, there is nothing permanent in this world except changes. लेकिन वो चेंज क्या आपके लिए पॉजिटिव नोट पे आते हैं या नहीं? वहीं दूसरी तरफ हैंड इन सो ये चाह रहे होंगे कि कोरियन टीम जो है वो इक्वलाइजर दागे जिसकी आवश्यकता है। ना ये 1-0 की जो लीड चाइनीज साइड ने बनाई, हालांकि इट्स टू अर्ली टू से इट सेफ बिकॉज इसके बाद भी 3 और क्वार्टर का खेल खेला जाना बाकी है। लगभग 1.25 मिनट का खेल इस क्वार्टर में भी बचा है। कोरियन साइड ने अटैक बिल्ड किया, 23 मीटर की लाइन को भेजा है। बेहतरीन स्टील चाइनीज साइड के द्वारा, मगर अभी भी पूरी तरीके से नॉलिफाई नहीं कर सकते आप। सर्कल पेनिट्रेशन बैकहैंडर की कोशिश की गई थी वहां मिंगचोंग किम के द्वारा, और ऐसे मौके जब जब चाइनीज साइड के लिए बनते हैं आमतौर पे वो अपने आप को सेफ नहीं पाते बिकॉज डिफेंडर स्ट्रगल कर रहे हैं उनके। तो एक आसान सा चांस था जरूर, लेकिन गंवाया। It was definitely an opportunity, but China once again defended quite well. The backhander that she went for was a little off balance. They did have shots up front. Now another opportunity. This time it's a Korean number 11, Haijin Cho, who did try to dodge a couple of defenders, but eventually could not retain any control over the ball. But she made an excellent run, a blistering run along the middle. China have to be careful here because Korea are displaying the intent that can lead to a goal. पहला फाउल आज के मुकाबले का, और अब तक हमने देखा है काफी नियमवत चला ये मुकाबला, चाहे वो चाइनीज साइड हो चाहे वो कोरियन टीम हो। बैलेंस बना के रखा है, जो नियम है उनकी पालना अब तक की है दोनों टीम्स ने। लॉन्ग एरियल पास ढूंढने की कोशिश, लेकिन जब तक गेंद को वहां रोका जाता टियान लू के द्वारा, जिन्होंने कल गोल दागे थे,
first quarter eventually peters out. China do hold on to the lead.